people of the national capital to cast their ballot for the Delhi Assembly polls. And now with just 3 days left for the February 5 Delhi Assembly elections, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal has written to the Chief Election Commissioner to appoint independent observers for his new Delhi constituency, where party workers were allegedly being attacked and harassed. Urging the CEC to provide protection to AAP volunteers, the former Delhi Chief Minister also asked him to suspend the police officials who failed to deliver their responsibilities during attack on his party workers. While alleging that several AAP workers were being harassed and attacked in the new Delhi Assembly, which Kejriwal has been representing since 2020, he demanded the arrest of BJP members for carrying attacks on them. In fact, what we are understanding, Arvind Kejriwal is expected to do a press conference in a short while from now. Big allegation coming in from Arvind Kejriwal. Well, it's not the first time that the Aam Aadmi Party has alleged that their party workers, leaders are being targeted. In fact, with just 3 days to go for the Delhi polls, AAP's national convener has written a fresh letter to the Chief Election Commissioner asking him to take action, urging him perhaps to take actions against the neglecting cops who were present at the site where the Aam Aadmi Party alleges that their workers were attacked. Meanwhile, a poster war between the Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party continues to heat up, where the Aam Aadmi Party has launched a fresh attack on the Bharatiya Janata Party over health services in the national capital. A new AAP poster accuses the Bharatiya Janata Party of planning to end free facilities for Delhi residents. The poster features the word ASUR, implying BJP's alleged intent to take away welfare benefits. Former Delhi BJP President and Party MP Manoj Tiwari, along with Delhi BJP President Virendra Sachdeva, launched the 4th campaign song for the party for Delhi elections 2025. In fact, we have Arvind Kejriwal speaking on his fresh letter to CEC. Let's listen. बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, इसके ढेरों वीडियो आए हैं। कल संजय सिंह जी खुद एक जगह मौजूद थे जहां पे इनके गुंडों ने पीटा, पुलिस वहीं मौजूद थी। पुलिस से जब पूछा तो बोले जी ऊपर से आदेश हैं कि कुछ नहीं करना है। पुलिस खड़े होकर देखती रहती है, फिर इनके गुंडों को भगा देती है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसी को गिरफ्तार करके उसी पे 4 केस झूठे थोप देती है। उसको पूरा दिन बिठा के रखा जाता है और फिर पूरी रात बिठा के उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है। खुलेआम पूरी दिल्ली में मेरे पास न जाने कितने फ़ोन आए हैं, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। उनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो देख लो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उन्हें धमकियां दी जाती है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। उन्हें धमकियां दी जाती है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हें
तरह तरह से तुम्हारी नौकरी पे तुम्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कई ऐसे वाकये सामने आए हैं जिसमें महिलाओं के ऊपर हमले करवाए गए हैं। दिल्ली के लोगों ने इस किस्म का चुनाव कभी नहीं देखा था। दिल्ली के लोग शालीन लोग हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। पूरे देश से लोग यहाँ आके बसते हैं और अपनी नौकरी करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहते हैं। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों को इस गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट होना होगा। दिल्ली इस किस्म की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आज पूरे दिल्ली के लोगों की आवाज़ को एकजुट करने के लिए एक हैशटैग शुरू कर रहे हैं, हैशटैग अमित शाह की गुंडागर्दी। इस हैशटैग को इस्तेमाल करके मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है कि आप इस हैशटैग के ऊपर जितना, अगर कोई आपके साथ कोई दुर्व्यवहार, हमला, गाली गलौज, धमकी ऐसी घटना होती है, आप इस हैशटैग को इस्तेमाल करके ट्विटर पे ट्वीट कीजिए। अगर आपकी नज़र में कोई घटना आपके साथ नहीं हुई लेकिन आपको कहीं पता चला ऐसा हुआ, तो भी आप उस घटना को, इस हैशटैग को, अमित शाह की गुंडागर्दी, इस हैशटैग को इस्तेमाल करके आप रिपोर्ट कीजिए। चाहे पुलिस की तरफ से कोई गलत आपके साथ व्यवहार हुआ हो, चाहे प्रशासन की ओर से आपको प्रताड़ित किया गया हो, चाहे बीजेपी की ओर से आपको प्रताड़ित किया हो, किसी भी तरह की प्रताड़ना कहीं भी आपको गाली गलौज के रूप में, फिजिकल हमले के रूप में, धमकियों के रूप में कहीं भी आती है, तो आप इस पे हैशटैग करके तुरंत रिपोर्ट कीजिए। पूरा देश इस हैशटैग के तहत देखेगा कि अमित शाह जी ने किस तरह से गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली के लोगों पे। वो डराना चाहते हैं, वो धमकाना चाहते हैं। मैं अमित शाह जी को पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपने हमें डराने के लिए न जाने कितना कुछ कर लिया, आज तक नहीं डरे, अब भी नहीं डरेंगे। आप अपनी गुंडागर्दी बंद कीजिए। आप अपने चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, उन मुद्दों की बात कीजिए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, ना आपके पास सीएम का चेहरा है, ना आपके पास कोई नैरेटिव है, ना आपके पास दिल्ली का कोई प्लान है। केवल और केवल आप गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं। मेरी दिल्ली की जनता से यह भी अपील है कि आप अपना वीडियो, कहीं भी कुछ होते देखें तो उसका वीडियो बना लें, लेकिन वीडियो बनाते टाइम अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये लोग वीडियो बनाने वाले पे भी प्रहार करते हैं। फोटो खींच ले, वीडियो बना ले, और कुछ नहीं है तो टेक्स्ट के जरिए ही आप ट्वीट में अपना पूरा वाकया बताइए। पूरी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पूरी दिल्ली को इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पहले अमित शाह जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरे गैंगवॉर चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, महिलाएं असुरक्षित हैं, और अब तो उन्होंने जानबूझ के पूरी दिल्ली को अपनी गुंडागर्दी से पूरी दिल्ली को परेशान कर रखा है। लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मैं समझता हूं कि हम पूरी दिल्ली को इसके गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट करेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप। थैंक यू। Well, you just heard Aam Aadmi Party's national convener and the former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal accusing that the party workers and people of the national capital who support the Aam Aadmi Party are being attacked, and police is not taking cognizance of such matters. In fact, he also launched a fresh attack on the Home Minister Amit Shah. In fact, he said that they are launching a new hashtag, Amit Shah ki Gundagardi. In fact, a fresh attack coming on by the Aam Aadmi Party on Home Minister Amit Shah and the Bharatiya Janata Party. In fact, he very categorically said these incidents needs to be reported with the hashtag Amit Shah ki Gundagardi. Once again, Arvind Kejriwal waking up the issue of law and order in the national capital. In fact, we've been seeing security, law and order becoming one of the key issues here in the national capital right ahead of the assembly polls. In fact, Arvind Kejriwal wrote a letter to the Election Commission also asking them and urging them to suspend the police officers who were there on duty when these alleged incidents had taken place. In fact, I have with me my colleague Kabir Naqvi joining us on the phone line to give more perspective on this story. Well, Kabir, fresh allegations, but
what we are seeing right now in the national capital is that the same things are being said once again by the Aam Aadmi Party's national convener. Do you think that law and order will be one of those issues on which the Delhi voter will step out and vote? We were just talking a couple of minutes back about how the freebie war, corruption, a toxic Yamuna, those are supposed to be the main poll issues and the main poll planks. But now it seems like after yesterday's budget and that magic bullet to the middle class, that is something that has to be taken into account. And of course, the law and order situation, because this is not the first time that the Aam Aadmi Party has raked this issue. You remember what happened in Nangloi, the couple of gun battles that we saw. Arvind Kejriwal has categorically come out and said that Delhi has been divided into 11 areas and gangsters are calling the shots. And today, with this new hashtag, of course, we shouldn't say that the Aam Aadmi Party has launched this particular hashtag because it is now on the Janta of the national capital, whether this hashtag is going to trend or not. But social media is another arm. It's another way how political parties are now, essentially putting through their might. Who has a better social media management team also, speaks volumes about what the party is going to do and what kind of political dividends will they get. So we'll have to wait and find out. Just a couple of days left, Yash. 5th of February is when the national capital goes to vote. Will this become one of those central issues? Is law and order really a problem for the Delhi walas? Well, we'll find out on the 8th of February now, won't we? Out on the 8th of February, but it seems that social media perhaps is one of those tools for both the Aam Aadmi Party and for the Bharatiya Janata Party to launch attack against each other. In fact, we just saw the poster war also erupting in the national capital. But the major question here is it going to make a difference on the electoral politics? Because social media is a place where people usually speak a lot, but we have seen in the past also that what happens on social media doesn't really transpire in a similar fashion on the ground. You're absolutely right. You see, again, the rural-urban divide comes into play. Social media and its penetration into the rural area might be a little bit different than what it actually does to the urban voter. And now there is urban voter apathy. Will the youngsters really step out and vote this time in the national capital? Will the middle class, have they been given that kind of push with the, budget and the no taxation, till 12 lakh rupees of income? Will that really push and urge the voters to step out? We'll have to wait and find this out, Yash, because firstly, it's again important to know that the middle class, about 60% of the national capital is middle class. The national income is about, the average income, beg your pardon, is double the national, average. So again, two prime and pertinent points that need to be taken into account. But social media and its influence may be a little bit more in the urban areas than in the rural areas. But again, the battles are divided. New Delhi, we're talking about Parvesh Verma and Arvind Kejriwal. Kalka ji, we're taking a look at how Atishi has been able to put forth her ideals. When you're talking about the CR Park and the Greater Kailash area, it's Saurabh Bhardwaj and his counterpart. So these are interesting fights, and it's going to depend on constituency to constituency. What happens in New Delhi might be very different from what happens in Seelampur. So we'll have to wait and find out. But social media and its influence, let's wait for the results to come out.